गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू ऑल? आप लोग कैसे हो? कितने लोगों ने जो ब्लॉग पढ़ना शुरू किया, जो मैंने लिखना शुरू किया है, मैं पोस्ट भी करता हूँ स्लैक चैनल में एंड टेलीग्राम में। हाउ मेनी ऑफ यू स्टार्टेड रीडिंग द ब्लॉग्स? अभी आई थिंक थोड़ी मिनट पहले भी एक ब्लॉग आया होगा, अगर आपने होंगे तो lesson from the karma adhyay in the Bhagavad Gita that can be applied to a stock trading. How many of you have read the Gita, or आप में से कितने लोग? Some soon after I will write ki as a trader what you can learn from the Bible also, and as a trader what you can learn from Quran also, because every religious script has taught us to do things, but we are not able to connect. So लोगों को लगता है कि वो spiritually है. No, it's not spiritual. They have taught us how to live the life, right? So as a trader also you can connect the principles what has been taught in Gita or Quran or Bible, right? तो गीता में कर्मा अध्याय में कृष्ण भगवान करते हैं कि focus on your duties, right? So what are the duties? Can anybody tell me क्या duties है हमारी as a trader? So let me do one thing. Can you see these all? Focus on your duties, right? What is the duties as a trader? So जैसे भगवान कृष्ण कहते हैं कि importance of performing one's duty without attachment to the results. Stock traders should focus on their trading duties, such as developing trading plan, following a risk management strategy, continuously learning and improving their skill, instead of being solely focused on the profit and losses of individual trades. Traders should prioritize following their trading plan, executing their trades with the discipline. Is it? Should we do it? But what we do? आप मुझे बताओ कि मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स अनप्रॉफिटेबल क्यों होते हैं? वो क्या करते हैं? एब्सोल्युटली अगेंस्ट करते हैं, एब्सोल्युटली जो गीता में बताया गया है, जो कर्मा का अध्याय बताया है, उसके अगेंस्ट में करते हैं. वो रिजल्ट्स पे फोकस करते हैं, प्रॉफिट पे फोकस करते हैं, लॉस पे फोकस करते हैं, दे नेवर फोकस ऑन देयर ट्रेडिंग प्लान, दे नेवर फोकस ऑन देयर रिस्क मैनेजमेंट, दे नेवर फोकस ऑन इंप्रूविंग देयर स्किल्स, राइट? इज इट? हाउ मेनी पीपल एग्री विद मी? और उस चक्कर में दे नेवर इंप्रूव देमसेल्फ एज अ ट्रेडर, राइट? Cool. Then accept the consequences of your actions, right? कि every action has a consequence. जैसे कोई भी action है तो उसका reaction होता है. तो one must accept the result of their action. Similarly, stock trader must accept the losses are inevitable part of trading. That they cannot control the market. Instead of dwelling on past losses or being overly influenced by emotions, traders should focus on learning from the mistake and improving their strategies. Is it right? Should we do it as a trader or investor? Then practice detachment. बहुत powerful चीज है ये. If you cannot detach, right? Like just giving me example. Lord Krishna teaches the importance of detachment, right, from the result of one's action. So similarly, stock traders should not become overly attached to their winning trades or obsessed with the chasing profits. Instead, they should maintain a level of detachment, focus on executing their trades with discipline and following their trading plan. ऐसा नहीं है कि लॉस में ही, प्रॉफिट में भी आपको ओवरली ऑब्सेस नहीं हो जाना है कि यार पैसा आ रहा है और कमाए. Just keep executing your plan. Winning trades and losing trades is the byproduct of your process and whatever the plan you have decided, right? Self-awareness. This is very important as a trader. The Bhagavad Gita emphasizes the importance of self-awareness, knowing one's true nature, right? तो सबका एक अलग नेचर है, सबका एक साइकी है, सबका एक रिस्क एपेटाइट अलग अलग है. एवरीबडी इज अ डिफरेंट इंडिविजुअल, राइट? सिमिलरली स्टॉक्स ट्रेडर्स टू ड्राइव टू डेवलप सेल्फ अवेयरनेस ऑफ देयर ओन ट्रेडिंग स्टाइल, राइट? कि जो भी स्टाइल आप काम कर रहे हो उसकी अवेयरनेस आपको बिल्ड करना चाहिए. जैसे कि अगर आप इंट्राडे करते हो तो उसमें कितना फास्ट डिसीजन लेना है, डज इट शूट्स योर नेचर और नॉट. सो आपको स्विंग करना है, वो आपके नेचर को शूट करता है नहीं करता है, उसमें जो भी एग्जिट एंड एंट्री करता है, आर यू कंफर्टेबल और नॉट, राइट? सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. इसको बोलते हैं सेल्फ अवेयरनेस, राइट? कि आपने जो चूज किया है, जो स्टाइल, वो आपके नेचर को शूट करता है नहीं करता, या तो आपको क्या चेंजेस करना है, राइट? सो दिस इज व्हाट इट ऑल अबाउट सेल्फ अवेयरनेस, राइट?
In summary, the Karma Adhyay from Bhagavad Gita emphasizes the importance of focusing on one's duties, accepting the consequences of one's actions, practicing detachment, and developing self-awareness. Do you think this is very important if you want to strive in stock market as an investor or trader, and you want to be consistently profitable for very very long time? And most importantly, you should have peace with yourself, right? आपको लगता है ये प्रिंसिपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ इन्वेस्टर्स हमारे लिए या एज अ ट्रेडर व्हाटएवर यू आर इज इट कैन बी अप्लाई टू लाइफ आल्सो बट मैंने सोचा कि लेट्स लुक इट आवर spiritual guidance in connecting with the dots, like how we can connect as a trader or investor.